Hello friends, welcome once again. I got a WhatsApp message from one candidate, probably a CDS candidate. He was asking me, sir, आपके वीडियोस में एक चीज़ तो पता चल रहा है कि SSB में हमें TAT WAT नहीं ठीक करना है, खुद को ठीक करना है. उसमें ये भी समझ में आ रहा है कि खुद को ठीक करने के there are 4 dimensions. One is the physical dimension जिसको कि आप L1 बोलते हो, L2 is intellectual dimension, L3 is emotional dimension and L4 is value quotient or you also call it spiritual quotient or the strength of character. सर ये फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल इसकी तो थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है और आपके वीडियो से पता चल रहा है. कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज दिस वैल्यू कोशेंट और कैरेक्टर डेवलपमेंट और द स्पिरिचुअल कोशेंट? सो दैट्स अ क्वेश्चन. और उसका सेकंड पार्ट था उसका उसी मैसेज में कि सर बैलेंस पर्सनालिटी में ये भी बात समझ में आ रहा है कि हमें इन चारों डोमेन को ठीक करना पड़ेगा. जैसे कार के 4 पहिए का एग्जांपल आप देते हो तो फिजिकल डायमेंशन समझ में आता है. वी आर गोइंग फॉर SSB इंटरव्यू, सो इट्स नॉट अबाउट डूइंग GOR एंड इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, अबाउट बिल्डिंग फिजिकल एंड्योरेंस एंड सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल रूटीन. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आपने बताया लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग स्किल, कॉन्फ्लिक्ट, सो मेनी थिंग्स जिसको डेवलप करने से ये समझ में आता है कि reasoning ability, effective intelligence, organizing ability and power of expression is of course your ability to communicate. ये समझ में आता है. इमोशनल में ये भी समझ में आता है कि how do you develop self awareness, understanding your own strength and weaknesses, self regulation, internally कैसे अपने आप को मोटिवेट करना, social awareness and social regulation जिसको करने से SSB में जो OLQ है that is social adaptability, cooperation and sense of responsibility gradually develop होता है when you develop these things. लेकिन सर ये समझ में नहीं आया कि वैल्यू क्वोशिएंट क्या है एंड क्योंकि वो जब समझ में नहीं आएगा तो हाउ डू वी डू दैट? कैन आई रिक्वेस्ट टू गिव ए क्लैरिफिकेशन ऑन दिस? सो इस कमेंट के बेस पे आई विल टेल यू व्हाट इज़ वैल्यू क्वोशिएंट. और इससे पहले कि आप इस वीडियो को आगे देखो, एक और वीडियो का मैं रेफरेंस देता हूँ. उस वीडियो का नाम है वैल्यूज़ फॉर लीडरशिप एक्सेलेंस. ये AFOSOP का एक वीडियो है, वैल्यूज़ फॉर लीडरशिप एक्सेलेंस. उसे जरूर देखना. उससे पहले लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज दिस वैल्यू क्वोशिएंट टू यू. So let us understand what is this value quotient, and before we understand value quotient, what is values? So I'll say values are principles or beliefs that guide our behavior and our decision making process. So our decisions are influenced by our values. They represent what we consider important and worthwhile in our life. तो हमारे वैल्यू निर्णय को इन्फ्लुएंस करता है, निर्णय लेने के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है. तो जब आपके TAT के रेस्पॉन्सेस को देखते हैं और आपसे पूछते हैं व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज़ करंटली हैपनिंग एंड व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम, इसको देखने से आपके वैल्यू सिस्टम की समझ लगा सकते हैं क्योंकि आपके वैल्यूज़ आपके उस पूरे प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है. इसका एक उदाहरण आगे जाके मैं दिखाऊंगा तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा. सो हमारे वैल्यू जो है इट सर्व्स एज ए फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग आवर चॉइसेस, चुनाव, बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स वी हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस. उस फ्रीडम ऑफ चॉइस में क्या चॉइसेस क्रिएट हो रहा है दैट इट सेल्फ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर वैल्यू सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, निर्भया का रेप होना वॉज अ वैल्यू इन एक्शन. उस बंदे का वैल्यू सिस्टम खराब था, इसलिए उस परिस्थिति में जब निर्भया अकेली बस में आई अपने दोस्त के साथ में, बस खाली था, उस ड्राइवर और उसके जो बाकी साथी थे उनके दिमाग में उस तरह का एक ऑप्शन आया. दैट वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ वैल्यूज they possess. And how do we evaluate those options and how do we understand the consequences of our action that we are most likely to be facing once those actions are executed? इसकी समझ या ना समझ वो आपके वैल्यू के ऊपर आधारित होता है. इसको हम आगे एग्जाम्पल से और समझेंगे.
सो हमारे वैल्यूज़ जो है वो हमारे हर डायमेंशन को इन्फ्लुएंस करता है. हमारे पर्सनल रिलेशनशिप, माई रिलेशनशिप विथ माई सेल्फ गेट इन्फ्लुएंस बाय दैट, दैट्स माई सेल्फ कॉन्सेप्ट. मेरे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने समाज में, कॉलेज में, स्कूल में, वर्क एनवायरमेंट में, एसएसबी में, एवरीवेयर माई बिहेवियर इज greatly influenced by the kind of value that I possess. So it's very important to understand our own value system. And when we are able to align our decisions, our choices, our decision making का entire जो mechanism को, when we are able to align it with our core values, that is the time when we have a contentment, satisfaction, authenticity and a sense of satisfaction कि मेरे values और मेरे decisions, जीवन के निर्णय aligned है. And वो हमें एक बहुत अंदर से एक आत्मसंतुष्टि की अनुभूति देता है. That's when your values are aligned with your decisions. और ये इसलिए होता है because our values reflect our individuality, our priorities and what we perceive as meaningful and important to us in our lives. And उसी जगह पे when we take decisions that are converse to our value system, मतलब हमारे values के against में जब हम decision लेते हैं, that's a time when we feel internal conflict, when we feel restlessness, discomfort, inner conflict and a sense of being off track from our values. हमें ही पता चल जाएगा कि मैं ये करना नहीं चाहता हूँ लेकिन किसी कंपल्शन में ये कर रहा हूँ. इसकी समझ भी बहुत क्लियर हो जाएगा when you understand your own core values. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने वैल्यू की सही समझ हो और ये भी समझना पड़ेगा कि दिस वैल्यूज़ कैन गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ लाइफ. इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय योर पेरेंट्स, बाय योर स्कूलिंग, बाय योर फ्रेंड्स, बाय द काइंड, फॉर एग्जांपल एसएसबी कैंडिडेट्स के लिए बाय द काइंड ऑफ कोचिंग दैट यू गो थ्रू, whether it is an integrity based coaching or it is a disintegrity based coaching, your life experience, personal experience and individual perspective, all these things greatly influence the value, and the value keeps growing either for good or for bad as we move forward in life. So it's very important to understand the factors that have influenced you to be the kind of person you are and the kind of values that you possess for yourself. So honesty, integrity, compassion, fairness, respect, care, love, tolerance, acceptance, integrity, reflection, self-reflection, so many of them are there which are certain examples of personal values or values. One video that I will again recommend you to watch is Values for Leadership Excellence. It's an AFOSOP video made by me. I've conducted that session in the Pune University. So that's the Values for Leadership Excellence. Once you watch that, you'll understand more about this topic. So understand our values and consciously taking care of those values when we are processing and taking decisions in life and in SSB will help you align your decisions to your core values. इससे हमें एक बहुत फुलफिलिंग लाइफ का मिलता है. इससे इट इज़ मच मोर ईजियर टू एनालाइज योर बिहेवियर एंड रिफ्लेक्ट अपॉन व्हाट वेंट रॉन्ग और व्हाट वेंट राइट बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ डिसीजन एंड व्हाट वैल्यूज वर मेकिंग यू टेक those decisions, and this will allow you to align your personal choices to what you hold very dear and important to you in your life. That's your values. इसके साथ align करना बहुत easy हो जाएगा when you understand your own value system. So उस कैंडिडेट का जो व्हाट्सएप में मैसेज किया था उसका अगला सवाल है सर व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर. दे आर एक्चुअली ओवरलैपिंग. योर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय द वैल्यूज यू होल्ड. सो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर रेफर्स टू द पर्सनल क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू अ पर्सन's moral, ethical, fortitude, resilience and personal integrity. सो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर के कुछ एट्रीब्यूट्स है जो मैं आगे आपको बताऊंगा. वंस यू अंडरस्टैंड दैट यू कैन हैव अ कंपैरिजन कि क्या वो जो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर्स के इंडिकेटर्स है या सिम्टम्स है या मैनिफेस्टेशन है क्या वो आपके पर्सनल लाइफ में आपके एसएसबी के प्रिपरेशन में उस तरह से वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा. अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है. योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिकमेंडेड फ्रॉम द एसएसबी विल बी वेरी हाई. और अगर नहीं दिख रहा है देयर इज अ केस दैट वी नीड टू correct it, develop it, and it can be developed, it takes time. So strength of character, it represents the inner strength and steadfastness of a candidate or an individual in upholding his own principles, values and beliefs even in the face of challenges, adversity or temptation.
आपको हम कोचिंग वाले बहका सकते हैं कि ऐसा लिख दो वैसा लिख दो, इससे आप सेलेक्ट हो जाओगे, लेकिन जब आपके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर होगा आप हमारे उस गाइडेंस को भी चेक कर सकते हो कि क्या ये सही है या गलत है या आपको भ्रमित कर रहे हैं. एंड यू कैन ऑलवेज टेक ए कॉन्शियस चॉइस वेदर टू एक्सेप्ट आवर गाइडलाइंस और नॉट एक्सेप्ट आवर गाइडलाइंस. सुनो सबकी, करो मन की, बट दैट मन विल ओनली डू राइट थिंग्स व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर. तो मैं अभी सिंस आप स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, सो आई विल टेल यू सम इन वेरी सिंपलिस्टिक फॉर्म व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर. Okay, so a person with strength of character will demonstrate these qualities that I'm going to list now. Pay attention to this and we will thereafter relate with a couple of TAT responses to see whether these qualities are coming or not coming. So first is, he will be an honest person. Next is a person who is loyal to people, to organization, to country. A person who can be trusted, विश्वास करने योग्य होगा. A person with a sense of duties and obligations, professional duties, personal duties, social responsibilities, and he will be discharging his obligation as and when what is expected of him. A person with integrity. There's a difference between a person being honest, a person being integrity. Integrity is being honest even when you're not being observed. And honesty is others' opinion about you. He is an honest person. But integrity is a personal character. A person with value clarity, who knows what is right and what is wrong, and he has got clarity. And that clarity is seen in the way he discharges his obligations, he takes decisions. A person with inner clarity, a person who is internally very, very clear, is not influenced by external factors. He considers everything but takes his own decision because he's clear within. He cannot be, distracted so easily. A person who gives others their due, जो दूसरों को उनका appropriate जो भी शेयर ऑफ अप्रिसिएशन और थैंक्स करना वो करता है. He does not take others credit to himself. A person who is considered to weak, it can also be weak in terms of physical weakness, financial weakness, intellectual weakness, or maybe opposite gender के साथ जो conduct है. A person who has principles and stand by them. कुछ उसके निजी principles है और उन principle के ऊपर वो अडिग खड़ा हो सकता है, बजाय कि विशी वाशी और अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए जो है ये जैसे पॉलिटिशियन पैर बदलते रहते हैं. He does not do that. A person not too elated by good fortune, ना सक्सेस में हाई होता है, and not too depressed by bad, ना फेलियर में बहुत ज़्यादा लो होता है. Whose fluctuations are balanced, control. This is the characteristic of a person with strong character. जरूर कमेंट लिख के बताना क्या समझ में आया. ओके, नाउ इसी वैल्यू या स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर को समझने के लिए हम दो WAT वर्ड और एक TAT को लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे और देखेंगे कि जिस कैंडिडेट ने उसे लिखा है, इज इट स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर कमिंग एज एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल. What he conveys through his WAT, we will see if that is coming in action in his TAT responses. अगर आता है then there is congruence in his performance. अगर वो नहीं आता there is incongruence. और आपको पता है the concept of congruence मैंने explain किया हुआ है और उसके लिए आपको एक वीडियो देखना है, वो है assessment of projective technique. AFOSOP के वीडियोस का नाम है Assessment of Projective Technique. Request you to watch that. Now before that, let me tell you the AFOSOP 2 weeks offline composite batch registration is open. हर मंथ में होता है, तो जून, जुलाई, अगस्त वगैरह का सब शेड्यूल तैयार है. So those who wish to register for the same, it will be conducted at Nagpur. It will be a fully residential program. Pick and drop facility from Nagpur railway station to the campsite will be available. Hostels say separate for boys and girls are available. Excellent vegetarian food will be served, and along with the complete intensive composite batch, that is SML and SSB के training के अलावा recreational facilities and adventure facilities will also be provided to you, and this includes in a highly subsidized fees as compared to any other coaching centers operating elsewhere in country. So to register, these are the two numbers on which you have to register.
9511266172 या 9090099035. Kindly share this information with your friends as much as possible. Let's come back to the topic. Okay, so for the purpose of example, मैं एक WAT का वर्ड बताता हूँ, lust, और उसमें कैंडिडेट्स लिखते हैं lust pollutes thinking, lust degrades human conduct. Very powerful sentences. And when I give them a word called trust, they say trust is the foundation of any relationship. Trust brings people closer. Trust deepens relationship. Trust brings respect in relationship. Same is true for SSB. There has to be a relationship of trust between the candidate and the assessors, be it the psychologist, be it the interviewing officer, be it the GTO, कि ये लड़का जो भी कर रहा है या कह रहा है या सोच रहा है, it is absolutely what he is from inside. वो दो चेहरा नहीं दिखा रहा, बाहर से कुछ अंदर से कुछ ये नहीं दिखा रहा. That trust, and that trust will build, and then definitely your recommendation is a high probability. So this was the WAT, right? Now let's see, when a picture was given, this was the picture, you can see there is a male and a female. There is some kind of a conflict between them because of it they seem to be upset with each other. When this picture was shown to a candidate and and he was asked to write what led to the situation, what is currently happening, what is the final outcome. I'll show you the response by a candidate, a 24-year-old candidate, and पहले लाइन में ही आपको दिखेगा there is a गड़बड़. बाकी आप पूरा पढ़ लेना, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा to save the time. So this is the response. The response says, Suma is a 24-year-old girl. Suma is a 24-year-old girl and her होना चाहिए, and her husband told her to have a physical relationship with his boss because he wants promotion. आगे आप पढ़ लेना. Suma, 24-year-old girl, is in conflict with the husband, or the husband is angry with her because the husband wanted this wife to go to his boss and have physical relationship with his boss so that he gets promotion. Now, when you look at this story, you can read the whole story. Now you tell me, when he writes lust pollutes thinking, lust degrades human conduct, do you think what he conveys through the WAT and what he has conveyed through his TAT, do you think there is a congruence between the two? I cannot see that. क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? क्या इसका वैल्यू सिस्टम WAT में अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है और TAT में अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है? ये बात आपको समझ में आ रहा है? WAT में बोलता है कि लस्ट ह्यूमन बिहेवियर को डिग्रेड करता है. WAT में बोलता है कि लस्ट हमारे सोच को प्रदूषित करता है, लेकिन TAT में उसी लस्ट को यूज़ करके अपनी पत्नी को एक ऐसे काम पे भेज रहा है जिसके करने से पत्नी और पति के बीच का विश्वास का रिश्ता टूटता है. येट यू फील दैट यू विल गेट रिकमेंडेड. आपको दो फेस दिखाई दे रहा है. WAT में एक फेस, TAT में एक फेस. ट्रस्ट के लिए लिखता है ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी रिलेशनशिप, और आपको दिख रहा है कि TAT में उसी ट्रस्ट का ब्रीच हो रहा है व्हेन ही सेज गो टू माय बॉस एंड हैव फिजिकल रिलेशनशिप बिकॉज आई वांट प्रमोशन. जो अपनी पत्नी को अपने प्रमोशन के लिए इस प्रकार यूज कर सकता है, डू यू थिंक ही रेस्पेक्ट्स ऑपोजिट जेंडर? डू यू फील ही इज अ केयरिंग पर्सन? डू यू फील ही इज अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी? ऑल दोज वैल्यूज फॉर अपना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन विद कैरेक्टर जो आया है, कैन यू हाइड इट? There are coaching who says hide weakness in core quality. Can you hide these weaknesses? No, you cannot, because they are your natural self. That's the way you think, and it's coming out. Like that, trust brings people closer. Do you think after this incident his wife and he will ever be in comfort with each other? उसकी पत्नी इस चीज के लिए उसको कभी माफ कर पाएगी? And trust deepens relationship. This act is not deepening relationship, it is breaking relationship. And a trust brings respect in relationship. No, it's not. So when you look at the
characteristic or the manifestation of person with strength of character, an honest person, a person who is loyal, a person who can be trusted, a person with a sense of duties and obligation, a person with high integrity, a person with value clarity, a person with inner clarity, a person who gives others their due, a person considered weak, a person whose principles and stand by them, a person not too elated by good fortune and not too depressed by bad. Do you think this candidate who has written this WAT, set of WAT and this TAT is demonstrating that? If your answer is no, that's because he has a value problem. उसके वैल्यू सिस्टम में प्रॉब्लम है, जिसके कारण उसकी सोच में इस प्रकार से प्रदूषण आ रहा है. अगर ये समझ में आ रहा है तो मुझे जरूर बताना क्या समझ में आया. Because once you understand this, it will be easier for you to understand कि आप अपनी SSB की तैयारी में कहीं वैल्यू डेविएशन तो नहीं कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप भटक रहे हो और कुछ और ही करने के चक्कर में लगे हुए हो. सो ये बात समझ में आ रहा है तो ज़रूर अपना कमेंट लिखना. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कैन यू सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. एंड अगर आप लोगों को भी AFOSOP का ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑफलाइन बैच इज़ अवेलेबल एट नागपुर. हर महीने में होता है. यू कैन कॉल सेंड अस अ व्हाट्सएप मैसेज एट 9090099035 एंड विल रिवर्ट बैक टू यू द डिटेल्स. एंड ऑनलाइन के लिए यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट ऑन द सेम नंबर एंड आई टेल यू द डिटेल्स. जरूर कमेंट लिख के बताना क्या समझ में आया. हैव यू अंडरस्टूड टू सम डिग्री व्हाट इज वैल्यूज एंड हाउ important it is in terms of your life, and of course SSB. After all, SSB is a personality based selection. जरूर कमेंट लिख के बताना. थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच.